students. Today we are going to learn a lesson, the portrait of a lady of class 11. And in this lesson, we are going to know the important points which are very important from examination point of view. The main points on the basis of which CBSE asked the question. Today we will discuss those questions and those points too. The portrait of lady is written by a very famous writer Khushwant Singh. In this story, the author draws a paint portrait of his grandmother. He beautifully unfolds his relationship with her while describing her appearance and daily activities. In this lesson, writer has tried to present his relation with his grandmother in such a way that it will make you to feel that you are feeling your own grandmother with you. The relation of grandmother and writer is in such a way that it is unforgettable for Khushwant Singh because his childhood and great part of his childhood was spent with his grandmother, and how this story begins and how it is important for Khushwant Singh to describe about his grandmother we will get in this lesson. So students, first of all, I will like to tell you that I am going to use both of the languages, Hindi and English, because it will be very easy for you to understand it properly. First, इस कहानी में पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक पिक्चर बनाया हुआ, ड्रॉ किया हुआ पिक्चर, और इस पिक्चर में एक लेडी का पिक्चर है जिसमें यह एक पेन पोर्ट्रेट है. पेन पोर्ट्रेट का मतलब उनका डिस्क्रिप्शन, राइटर ने उन्हें इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि वह एक पोर्ट्रेट के रूप में एक इमेजिनेशन क्रिएट होगा आपकी आंखों के सामने, लगेगा सच में कहानी आपके सामने हो रही है और आप उस कहानी के पार्ट हैं, यानी आप अपने आप को खुशवंत सिंह की जगह पर एहसास करेंगे. और इस कहानी में ऑथर ने एक पेन पोर्ट्रेट क्रिएट किया अपनी कलम से, इस तरह से अपनी दादी माँ के बारे में डिस्क्राइब किया है कि लगेगा कि यह कहानी आपकी आंखों के सामने चल रही है और जीवंत कहानी है. इसमें अपनी दादी माँ के और अपने रिश्ते को उन्होंने इतने सुंदर तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि उनकी हर एक एक्टिविटी, उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ को राइटर ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और हमें इस बात का एहसास होगा कि शायद हम अपनी ग्रैंड मदर को याद कर रहे हैं या हमारी दादी माँ में वो सारे के सारे कैरेक्टर्स या कुछ कैरेक्टर्स तो मैच करेंगे ही करेंगे. तो पहले हम लोग अपीयरेंस ऑफ ग्रैंड मदर लर्न करेंगे कि जानते हैं कि दादी माँ की अपीयरेंस कैसी थी, वो कैसी दिखती थी. द ऑथर रिकॉल्स हिज ग्रैंड मदर एज अ वेरी ओल्ड लेडी विद द रिंकल्ड फेस. When he described about his grandmother was very old lady, and about her facial expression and description about her face, there were wrinkles on her face, crisscross here to there on her face. It means when a person becomes old, you can find the wrinkles on the face, यानी झुर्रियाँ, चेहरे पर झुर्रियों का पड़ जाना. दादी माँ के बारे में बताया कि वो बहुत बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ इधर से उधर चारों तरफ फैली हुई थी. She appeared so old that it was hard for him to believe that she had once been young pretty. In this context, the writer is not going to believe that his grandmother was a young lady during her young age, or the writer is not going to accept it that his grandmother was ever a young lady. यानी उसे ऐसा विश्वास ही नहीं था. उनकी दादी माँ इतनी बूढ़ी थी कि उनको विश्वास ही नहीं होता कि उनकी दादी माँ कभी यंग भी होंगी और सुंदर भी होंगी. She was short, fat and little stooped in appearance. If we describe the physical appearance of grandmother, she was fat and she was short in height and little bent. A hump could be seen on her back. तो उनकी appearance ऐसी थी कि वो मोटी थी, हाइट उनकी थोड़ी सी कम थी और उस पर देखा जा रहा था कि आगे से झुकी हुई थी और उनके पीठ पर छोटी सी कुबड़ नज़र आ रही थी. द ऑथर रिमेंबर्स हर मूविंग अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, काउंटिंग द बिट्स ऑफ हर रोसरी while her lips moved constantly in the silent prayer. It was the activity of the grandmother. Grandmother used to move in house here and there in the spotless white sari. She always used to wear the spotless. There were no any spots और एनी किसी तरह का धब्बा उनकी साड़ी पर नहीं देखा जा सकता था. पूरी साफ़ सुथरी और उजली साड़ी में ढकी हुई ग्रैंड मदर थी. एंड सी ऑलवेज बिजी इन काउंटिंग द रोसरी एंड माई प्रेइंग द गॉड.
सी ऑलवेज यूज टू सिंग द प्रेयर सॉन्ग। तो इसमें हमने देखा कि दादी माँ तो उजले रंग की साड़ी में अपने आप को रखती थी और काफ़ी सुंदर दिखती थी, और हर समय उनके हाथों में कंठी माला हुआ करती थी, जिनको उसके बीड्स को, उसके जो बीड्स होते कंठी माला के, उसको गिना करती थी और भगवान का प्रेयर किया करती थी। उनके हर समय यानी किसी भी टाइम उनके मुंह से प्रेयर छोड़ करके कोई दूसरी बातें नहीं। काम पड़ने पर वक्त के समय ही वो कुछ बोला करती थी, नहीं तो हर समय भगवान का प्रेयर किया करती थी। सी वॉज नॉट प्रेटी इन द ट्रेडिशनल सेंस येट हर सेरेनिटी मेड हर ब्यूटीफुल। राइटर ने दो शब्द यूज किया है, एक तो कह रहा है कि वो प्रेटी नहीं थी, दूसरी तरफ कह रहा है कि वह सुंदर थी। तो देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन द वर्ड प्रेटी एंड ब्यूटीफुल। प्रेटी can be described the physical beauty or appearance, charm on the face, charm on the body. But when we talk about the beauty, beauty means the internal beauty, the beauty of activity, the beauty related with all types of acts or behavior or generosity or gentleness or softness or kindness or peacefulness. तो इन सारी की सारे कैरेक्टर या ऑब्जेक्टिव दादी माँ के अंदर थे। सी वॉज नॉट प्रेटी फिजिकली बट सी वॉज ब्यूटिफुल बिकॉज हर बिहेवियर वेर रियली वेरी जेंटल, पीसफुल एंड टू मच generous. The writer is fully aware with it that his grandmother was not beautiful because he had never seen her pretty, but she was beautiful internally, not externally. So external beauty can be described by the word pretty, and internal beauty and the behavior and the activities can be described by the word beauty. So his grandmother was really beautiful. दादी माँ सुंदर तो थी लेकिन प्रेटी नहीं थी। प्रेटी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो फिजिकली सुंदर नहीं थी, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, वो बूढ़ी थी, वो स्टुप थी, वो उनका कुबर निकला हुआ था, और इसलिए राइटर को नहीं लगता कि वो प्रेटी थी। यानी उसकी उनके अंदर चार्म नहीं था, उनके फेस पर वो चार्मिंग अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन वो सुंदर थी अपने कर्तव्य से, अपने वर्क से। अगर इनिशियल ईयर्स की बात करें, उनके लाइफ की बात करें, लाइफ इन द विलेज, राइटर जो है और उसकी दादी माँ अपने मोस्ट ऑफ द टाइम विलेज में स्पेंड किए। इट मीन्स द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर हैड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द विलेज ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। राइटर जब बच्चा था तो वो अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहा करता था। यानी खुशवंत सिंह ने अपने बचपन को अपनी दादी माँ के साथ अकेले एक गांव में बिताया। तो व्हाट वाज द कंडीशन एंड हाउ दे स्पेंड देयर लाइफ टुगेदर। In the initial years of his life, the author lived with his grandmother in the village. If we talk about the childhood of the writer was spending his childhood time or initial age in the village with his grandmother. It only his grandmother and he himself were together in the village, sharing a good friendship. The grandmother was the good friend of the writer. She was grandmother as well as the best friend of the writer. His grandmother used to wake him up in the morning and get him ready for the school. The duty of the grandmother in the village and in the favor of the writer was to wake him up every morning, prepare him for the school, and she used to fulfill all the requirements of the writer. It was her first duty in the morning to wake up the writer, get him ready for the school, provide the uniform, provide the slates and the chalks on which the writer used to write. She would hand over to him the things he required in the school. यानी सारी चीज़ों की व्यवस्था, दादी माँ का पहला काम उसे सुबह में उठाना, राइटर को उठा करके तैयार करना, कपड़े पहनाना, और जो स्कूल की रिक्वायरमेंट की चीज़ें थी, उस समय जो था कॉपी और कलम और पेंसिल से लिखने वाले बच्चों का नहीं था। उस समय स्लेट हुआ करता था और चौक से बच्चे उस पर लिखा करते थे। तो दादी माँ का काम था कि स्लेट को तैयार करना और उसे चौक को प्रिपेयर करना ताकि राइटर जाए और स्कूल में उसका यूज कर सके। आफ्टर हैविंग थिक स्टील चपातीज विद द बटर एंड शुगर फॉर ब्रेकफास्ट दे यूज टू लीव फॉर स्कूल. Dadi Ma used to provide the breakfast in the form of steel chapati. The chapatis which she used to prepare at night was served as the breakfast with the butter and the spreaded sugar on it as the breakfast to the writer before going to school. And the author's grandmother always accompanied him to school as it was attached to the temple. Dadi Ma also used to go with the writer to his school because the school was attached with the temple. When the writer used to study in the school, grandmother used to sit in the temple and read the sacred books and scriptures. When the school was over, they come to house together.
the author, the priest of the temple was the teacher. He used to teach the students alphabets as well as the prayer of the god. तो इस तरीके से हमने देखा कि दादी माँ नाश्ता के रूप में राइटर को बासी रोटी उसके ऊपर बटर लगा करके और चीनी छिड़क करके दिया करती थी, और साथ में ग्रैंड मदर अपने ग्रैंडसन खुशवंत सिंह के साथ उनके स्कूल जाया करती थी, क्योंकि उनका स्कूल जो था वह एक मंदिर से अटैच था। जब खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ाई किया करते थे उस समय टेम्पल में बैठ करके और वो पवित्र ग्रंथों को पढ़ा करती थी, और मंदिर के जो पुजारी थे वहीं तो स्कूल के टीचर थे, वहीं बच्चों को पढ़ाया करते थे, अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे, भगवान के बारे में पढ़ाते थे, प्रेयर पढ़ाते थे। इट वॉज हर हैबिट carry several stale chapatis for the village dogs, which they used to feed while returning from the school. My grandmother was in habit of carrying the stale chapati for the street dogs when the school was over, and when they start their journey to their house or returning journey, she used to feed the street dogs with the stale chapati. It was the daily habit of grandmother. Grandmother काफ़ी जनरस और काइंड, इस बात से भी पता लगता है कि दादी माँ जो गली के कुत्ते थे उनके खाने की व्यवस्था करके जाती थी, अपने साथ बासी रोटियां ले जाती, और जब स्कूल ख़त्म होता और दादी माँ जब वापस होती तो रास्ते में ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर दोनों उस गली के कुत्तों को रोटियां फेंकते हुए खिलाते हुए घर वापस आया करते थे, which they used to feed while returning from the school. The grandmother used to sit inside the temple reading holy books while the narrator learned alphabets and prayer in the school. I have already described it that the grandmother was used to spend her time or school time in the temple. She was a very sacred lady and she used to read the religion books or scripts in the temple when the student, it means the Khushwant Singh, used to learn in the school. The priest was teaching them alphabet and the prayer, and they used to return back school together. So next, turning point of their friendship, life in the city. But this habit and this condition did not remain forever. A time got changed and the turning point in their relationship come when they have to live in the city. The turning point of their friendship come when they moved to the city to stay with the author's parents. In the village, grandmother and grandson were living together, but their parents were living in the town, in the city, and when they got settled properly, they called Khushwant Singh and his grandmother to live there together, and they had to go in the town. And that was the biggest turning point in their relationship. तो इस तरह से हमने जाना कि गांव में केवल खुशवंत सिंह और उनके दादी माँ अकेले रहा करते थे, वहाँ पर उनके माता पिता नहीं थे खुशवंत सिंह के माता पिता शहर में रहते थे, और जब उन्होंने पूरी तरह से शहर में अपने आप को सेटल कर दिया तो उन्होंने दादी माँ और ऑथर को भी शहर में बुला लिया, और शहर में जाना उनके ज़िंदगी का, उनके फ्रेंडशिप के बीच में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट के रूप में आया. Now they shared the same room. His grandmother no longer accompanied him to school since the author started going in a bus. As years rolled by, they saw less of each other. Even in the town, the grandmother and grandson had the same room. They were sharing the same room. But grandmother was not able to go with the writer to his school because he has started studying in convent school, and grandmother was not allowed to go there. The writer used to transport system. Khushwant Singh used transport system in the form of the bus. He used to go his school in bus, and grandmother was unable to go with him. With the passage of time, now their friendship started getting apart. It means their visibility, or they started seeing each other very less, or they started spending their time very minimum. तो इस तरह से हमने देखा कि शहर में जाने के बाद राइटर वहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, और वहाँ पर जो राइटर है उसको बस से जाना होता था स्कूल, पैदल नहीं जाना था कि दादी माँ भी उनके साथ जा सकती. और इस तरह से एक रूम में रहने के बाद भी राइटर और ग्रैंड मदर के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला गया और समय बीतता चला गया, राइटर बड़ा होता चला गया. मीनवाइल, एज देयर वाज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, शी टुक टू फीडिंग द स्पैरोज. शहर में गली के कुत्ते नहीं थे, इसलिए दादी माँ वहाँ पर कुत्तों को फीड तो नहीं कर पाती थी, रोटियाँ नहीं खिला पाती थी, लेकिन दादी माँ ने अपने हैबिट में एक चेंजिंग लाई और शहर में वो सी स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरो, द स्मॉल बर्ड्स विच लिव इन द हाउसेज. तो स्पैरोज जो छोटी गौरैया चिड़ियाँ होती हैं उनको खिलाना स्टार्ट कर दिया, उनको रोटियाँ क्रम्बल करके और डालती थी और गौरैया उन रोटियों को खाती थी. Unlike the village school, the author was not taught about the God and the scriptures. Convent school was not teaching
the prayers of the god and the alphabets, what the grandmother was aware about that. In the village, grandmother used to help the writer in learning the what had taught in the school, but in the convent school the subjects were totally different, so grandmother was unable to help the writer in learning more and more, and so it was the also biggest turning point in their friendship. तो हम लोग गांव के स्कूल में जो पढ़ाई होती थी, कॉन्वेंट स्कूल में वो पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ पर भगवान और स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाई नहीं की जाती थी, वहाँ पर की पढ़ाई दूसरी होती थी, वहाँ पर विज्ञान, समाज, मैथ, साइंस, इंग्लिश और डिफरेंट सब्जेक्ट जो ग्रैंड मदर के समझ से बाहर की बातें थी उनको पढ़ाया जाता था. Which troubled his grandmother. Grandmother was not happy with that because she wanted to help her grandson like the village, but she was unable to do so. She did not believe in what was being taught at his school and was unhappy as she could not help him with his lesson. Grandmother was not happy what was the convent school were providing to the students, and she was not believing that what was taught to the writer was good. Convent school and its syllabus was totally different from the expectation of the grandmother. दादी माँ को ये पसंद ही नहीं आता था कि कॉन्वेंट स्कूल में क्या पढ़ाई होती है. कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई से वो काफ़ी दुखी थी. वहाँ पर भगवान का प्रेयर नहीं पढ़ाया जाता था, और जो दादी माँ को जो चीज़ें आती थी वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़ाई जाती थी. दादी माँ राइटर को मदद भी नहीं कर पाती थी, उसे पढ़ा नहीं पाती थी. मोर एवर शी वॉज disturbed at the idea of music lesson being given at school, as she considered the music too unsuitable for the gentle folk. Her disapproval was conspicuous in her silence. The biggest thing what the grandmother did not like in the convent school was the teaching the music lesson. Grandmother was not considering that the music lesson was good for the people of the gentle folk or the good standard people. In her sight, the good standard people should not learn dancing, music and singing. It was the made for harlots or the beggars. In her sight, music का क्लास अच्छे लोगों के लिए, जेंटल फॉक के लिए नहीं बना था. दादी माँ की नज़र में ये जो नाच गाने और म्यूजिक का लेसन था, ये सब स्ट्रीट जो बेगर्स होते थे उनके लिए बना था, ताकि वो बेगिंग कर सके, गाना गा सके, डांस कर सके और उसके बेसिस पर पैसा कमा सके. बट ग्रैंड मदर वॉज अनेबल टू स्पीक एनीथिंग. शी डिड नॉट से एनीथिंग, बट शी वॉज नॉट हैप्पी एंड हर डिसअप्रूवल वॉज हर साइलेंस. शी did not tell anything to the writer. She just kept the silence, and that silence was disapproval. That silence was telling that the grandmother did not like the music lessons which were provided in the schools to the students. दादी माँ चुप रही यह बात जान करके कि राइटर को म्यूजिक के क्लासेस दिए जाते हैं. म्यूजिक के क्लास उनकी नज़र में अच्छे लोगों के लिए नहीं बना था. ये तो हैरलोट्स वगैरह के लिए बना था, वो तो बेगर के लिए बना था, वो लोग नाच गाने का यूज़ करते. अच्छे परिवार के लोगों के लिए यह म्यूजिक का लेसन अच्छा बात नहीं था. Grandmother combats her loneliness by feeding the sparrows. Most of the time, or the lonely time, she always used to spend with the sparrows. She used to feed the sparrows and try to indulge herself to spend her lonely time. अपने अकेलेपन को बिताने के लिए दादी माँ गौरैयों को खाना खिलाया करती थी. And when the author started going to the university, he was given a room of his own. And after long time, the biggest turning point came in the life of grandmother and grandson, because the writer started going to the university and he has his own personal room. Now he was not going to share his grandmother's room anymore. जब ऑथर यूनिवर्सिटी जाने लगा तो ऑथर का एक अपना कमरा हो गया और दादी माँ का रूम अलग हो गया. अब उनके रूम शेयरिंग भी ख़त्म हो चुकी थी. तो यह उनके दोस्ती के बीच की एक सबसे बड़ी गैप थी, एक दरार था, एक ड्रिफ्ट पैदा हुई. She accepted her loneliness and rarely spoke to anyone. Grandmother was not in mood to speak anything to anyone. She always used to keep mum and engaged in her prayer and counting the rosary bits of the rosary, because no one was there to share her feeling, and she was unable to talk with her grandson, because the grandson has grown up and he was going to university. दादी माँ के लिए यह बहुत बड़ा एक सदमा सा मालूम कह सकते हैं कि वो अकेली अब रहने लगी और वो किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, और अपने समय में बस अपने एक लॉनलीनेस को, अकेलेपन को एक्सेप्ट किया उन्होंने, और प्रार्थना में बिजी रहती, भगवान का नाम लेने में व्यस्त रहा करती. ऑल डे लॉन्ग शी सैट स्पाइनिंग द व्हील एंड रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. पूरे दिन, एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम इन द फ्री टाइम, ग्रैंड मदर यूज टू स्पिन द व्हील एंड जस्ट count the recite the prayers and count her rosary beads.
जो चरखा था, सूत काटने का चरखा चलाया करती थी, प्रेयर गाया करती थी और भगवान का नाम जपने रहने, कंठी माला जपती भगवान का नाम लिया करती। सी रिलैक्स फॉर अ शॉर्ट टाइम only in the afternoon to feed the sparrows who come in large number. The biggest duty and the very favorite duty of the grandmother was to feed the sparrows during the afternoon. That time was really great pleasure for her. She was feeling a lot of comfort and pleasure in feeding the sparrows. तो दोपहर के समय एक टाइम हुआ करता था फिक्स, जबकि गौरैया अपने आप उस टाइम पर चले आया करती थी। बहुत सारी गौरैया आती थी लार्ज नंबर में, और वह समय दादी माँ के लिए काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइडिंग होता था और आराम देने वाला था। वह अपने उस टाइम को काफ़ी इंजॉय करती थी गौरैयों को खाना खिलाने में। द बॉन्ड एंड द लेवल ऑफ कंफर्ट दे शेयर्ड विथ हर इज एविडेंट इन द फैक्ट दैट दे पर्स्ड इवन ऑन हर लेग्स एंड हेड. Gauraya or the sparrows were very fearless from her. They have accepted that the grandmother was not going to harm them. They used to sit on her shoulder, they used to sit on her legs, they used to sit on her head and feed themselves, because they knew, and the very strong bond of the friendship had got created among the sparrows and the grandmother. गौरैयों को इतना ज़्यादा विश्वास था दादी माँ के ऊपर कि वो उनके माथे पर आकर बैठ जाती, उनके पैर पर आकर बैठ जाती और दाने को खाया करती, और दादी माँ से उन्हें किसी तरह का डर नहीं था. शी यूज्ड टू बी एट हर हैप्पीएस्ट सेल्फ व्हाइल फीडिंग द स्पैरो एंड ग्रैंडमदर नेवर tried to shoot them away, and this was the really very pleasure time for the grandmother really used to enjoy this time in feeding the sparrows. and उन्होंने कभी भी उन्हें shoot them away यानी अपने से दूर भगाने की कोशिश भी नहीं की, उन्हें किसी तरह से झड़क करके अपने कंधे से और अपने माथे से हटाने की कोशिश भी नहीं दादी माँ ने किया था. Author leaves for the higher study, one of the biggest turning point in the relation. The author decided to go abroad for further study. Now the time came that the writer has completed his study in university, and now he had to go abroad for the further and higher education. He was sure that his grandmother would be upset at his departure. Writer knew it, that when the grandmother knew that the writer was going very far away from her, this message will make her too much unhappy, and she will fall in the great grief and pain to know that she would not be able to see her grandson anymore. तो राइटर को अब दूसरे देश या दूसरी जगह जाना था आगे की पढ़ाई करने के लिए, और उस समय में उसे पता था, राइटर को खुशवंत सिंह जानते थे कि अगर दादी माँ को यह बात पता चलता है कि वो उनसे काफ़ी दूर जा रहे हैं, अब उनके बीच में वो दादी माँ अपने ग्रैंडसन को नहीं देख पाएंगी, तो शायद उनको काफ़ी ज़्यादा दुख का अनुभव होगा और काफ़ी परेशान होंगी वो. ऑन द कंट्रेरी शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम अप बट डिडंट शो एनी इमोशन, बट इट वॉज द वंडरफुल एंड unexpected expression from the side of the grandmother. Grandmother did not show any type of emotion, pain or grief on her face. She came to railway station to bid a bye to the writer. She came to see off him and let him to go for the further study. It was totally different. It was अनएक्सपेक्टेड इन द साइड ऑफ द राइटर. राइटर ने जैसा सोचा था कि दादी माँ काफ़ी दुखी हो जाएंगी ये सुन करके और जान करके, ऐसा कुछ नहीं. दादी माँ के चेहरे पर दुख नाम का कोई चीज़ नहीं दिखा. जब वो छोड़ने के लिए राइटर को आती हैं रेलवे स्टेशन पर, तो उनके चेहरे पर एक पीस था, एक काम था, किसी तरह का दुख या दर्द या कोई पेन नज़र नहीं आ रहा था, कोई इमोशन उन्होंने नहीं दिखाया. शी वॉज absorbed in her prayers. She was just busy in her prayer, telling the beads of her rosary. As her usual routine, she was just counting the beads of the rosary and continuous engaged in praying the God. She silently kissed the author's forehead, which the author considered to be the last sign of their physical contact. And when the writer was about to depart in the train, grandmother kissed on his forehead, and this, according to the writer, it was the last physical contact between the writer and his grandmother. The impression of lips and the coldness could be felt by the writer for the long period of time.
जब राइटर को जाने का समय हुआ, ट्रेन पर बोर्ड होने का टाइम हुआ, तो दादी माँ ने उनके माथे पर अपने होठों से एक चुम्बन दिया, और वह शायद उनके बीच का लास्ट फिजिकल कांटेक्ट आप कह सकते हैं। राइटर को इस बात की फीलिंग हो रही थी कि किस तरह से उनके होठों की ठंडक उनके माथे पर एहसास किया जा सकता था। राइटर को लंबे समय तक इसकी फीलिंग रही। ऑथर्स अपनी पढ़ाई 5 साल के लिए वहाँ पर जाता है, और आफ्टर रिटर्निंग व्हाट हैपेंड ऑन हिज रिटर्न आफ्टर 5 years द ऑथर डिड नॉट फाइंड एनी चेंज इन हिज ग्रैंडमदर। इन द बिगिनिंग राइटर थॉट he might meet his grandmother after 5 years. He thought that his grandmother may die till then, or she could not live alive after his returning journey. But when he returned after 5 years, he found that the grandmother was in the same posture, in the same physical condition. There was nothing had changed, and her physical condition had not even slightly changed. She was as old as ever and remained absorbed in her prayers. She was in the same condition, in the same position, in the same mood. She was busy in her prayers, and nothing had changed in her physique. Even that day, the happiest moment of her was feeding the sparrows. And on that day, she was on her continuous and scheduled routine. She was not going to change her routine. And the afternoon, if she fed the sparrows, and Writer was thinking that his grandmother had reached to the such stage of oldness. From that stage no one can become more older. राइटर जब 5 साल बाद वापस आता है तो उसे पहले तो उसने सोचा था कि शायद 5 साल बाद वो अपनी दादी माँ को शायद न मिल पाए, या दादी माँ शायद जीवित न रहें। लेकिन जब राइटर वापस आता है तो पाता है कि ग्रैंड मदर के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आया है, थोड़ी सी भी ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हुई हैं, जैसी थी आज भी वैसी ही हैं, और बस अपने प्रार्थना में इंगेज थी, अपने प्रेयर्स में बिजी थी। और दोपहर में अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग उन्होंने स्पैरोज को खाना खिलाया। इन द इवनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर शी डिड नॉट प्रे, बट व्हेन द इवनिंग अराइव्ड the great change was found in grandmother. Grandmother did not pray to God on that day. In the evening, she was not in mood of praying the God. She collected several ladies of the neighborhood and sang song related to the homecoming of the warriors. She collected the old ladies of the neighborhood and she started singing. It was the great change, an unexpected change in the grandmother. It was the first time the activity which was created and done by the grandmother in the sight of the writer. She had never done the such, and she started singing the song of the homecoming warriors. लास्ट में शाम के समय देखा गया, दोपहर का तो शेड्यूल एकदम सही था, वैसा ही चला, लेकिन शाम में एक अजीब सी चेंज पाई गई दादी माँ के बिहेवियर में। और वह बदलाव यह था कि दादी माँ प्रेयर नहीं की उस दिन, और पड़ोस की औरतों को, बूढ़ी औरतों को उन्होंने बुलाया और गाना गाने लगी। और वह गीत हुआ करता था जो योद्धा अपने युद्ध के मैदान से वापस आते हैं उनके स्वागत में जो गाने गाए जाते थे, उस तरह के। इट सॉन्ग वॉज द रिटर्निंग वॉरियर्स, एंड इन हर साइट हर ग्रैंडसन वॉज द वॉरियर हु हैज़ रिटर्न होम, एंड टू वेलकम हिम शी स्टार्टेड सिंगिंग. शी हैड टू proceeded to stop singing in order to avoid overstrain. However, the next day she was taken ill. People and the family members tried to stop, or they told the grandmother to not do so, but she was not going to listen to anyone. She continuously did what she wanted, and on the next day she fall ill very seriously. अगले दिन देखा गया कि दादी माँ बीमार पड़ जाती है। दादी माँ की इस एक्टिविटी को देखकर परिवार के लोगों ने उन्हें मना भी किया कि वो इतनी ज़्यादा हरासमेंट वाला काम जो सिंगिंग और थम्बिंग ओल्ड ड्रम को है उसको बंद करें, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने अपना ही काम किया और अगले दिन वह बीमार हो जाती हैं। इसके बाद दादी माँ की डेथ, द डायग्नोज्ड with a mild fever by the doctor, grandmother knew that her end was near. She decided to spend the last few hours of her life reciting prayers. Doctor told that it was the mild fever and it could be cured, but the grandmother was sure that her end was very near. She predicted and told the family members that no one could cure her. It was her last time, and so she didn't want to spend her time or waste her time in any other activity except praying the God and counting the beads.
डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज़्यादा बुखार है लेकिन ये ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन दादी माँ ने यह बता दिया कि अब उनका अंतिम समय है, अब उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, और वो अपने उस टाइम को किसी दूसरे एक्टिविटी में स्पेंड करने की बजाय भगवान की प्रार्थना में बिताना चाहती थी और कंठी माला को जपने में विश्वास रख रही थी। Soon her lips stopped and moving and she died. After some time it was found that the rosary fell from her hand and lips stopped, and it was found that the grandmother was no more then. उस समय कुछ समय बाद ही पाया गया कि रोसरी उनके हाथ से गिर जाती है, उनके होठ शांत हो जाते हैं और यह पाया गया कि दादी माँ अब नहीं रही। A silent tribute by the sparrows. Here the writer is presenting that the animals had also the sense of love and care, how they tribute their love and care in return. The family went to make arrangement for the grandmother's funeral. All the people were engaged in the arrangement of the funeral ceremony of the grandmother. As they come with the stretcher, they stopped midway to find thousands of sparrows scattered around her dead body. When they brought the stretcher on which the dead body would be laid down, they found that the thousands of sparrows were just covered the whole body of the grandmother. They were sitting around her. The sparrow mourned the death of the grandmother in the utter silence. No sparrow was trying to produce any sound. They all were very silent and just sitting around the dead body corpse of the grandmother. They ignored the breadcrumbs thrown at them by Arthur's mother and flew away silently after the body was carried away for the cremation. When mother found that the lot of sparrow had gathered, she crumbled the bread in the same way as the grandmother used to do so and spread it on the ground so that the sparrow could feed. But she found that the sparrow did not take notice even the single bit of the bread, and they did not feed upon them. And when the dead body, a corpse of the grandmother, was carried for the cremation, and they all flew away, and they did not feed themselves on the bread provided by in the crumbled from by the mother of the writer. So the bread crumbs were swept away by the sweeper next morning, and in the same way, in the same amount, the sweeper next morning swept the crumbled birds and threw. तो इस तरह से देखा गया कि चिड़ियाँ भी इस सेंस से वाकिफ थी कि किस तरह से दादी माँ उन्हें प्यार करती थी और उन्होंने अपना ट्रिब्यूट कैसे दिया। जब दादी माँ को स्ट्रेचर पर लाद करके और उनको अब आगे की फनरल सेरेमनी के लिए ले जाया जाना था, तो लोगों ने पाया कि हजारों की संख्या में गौरैया आकर के वहाँ पर बैठ गई हैं और सारी की सारी चुप थीं, चारों तरफ बॉडी के बैठी और किसी तरह की चिरपिंग साउंड नहीं, आवाज़ कुछ भी नहीं। जब राइटर की माँ ने सोचा कि शायद दादी माँ उन्हें फीड किया करती थी और इसीलिए वो लोग आई हैं, तो माँ ने भी उसी तरह से रोटी के टुकड़ों को क्रम करके छोटे छोटे पीसेज में तोड़ करके और रोटी के टुकड़ों को फेंक दिया ताकि गौरैया उन्हें खा सके। लेकिन पाया गया कि गौरैया ने उस रोटी के टुकड़ों को नोटिस भी नहीं किया और वो उन्हें फीड करने की कोई इंटेंशन नहीं शो की। और अंत में यह पाया गया कि जब डेड बॉडी ग्रैंड मदर का लेकर के लोग चले गए तो गौरैया सारी उड़ गई और रोटी के वो टुकड़े नौकर के द्वारा अगली सुबह बुहार करके और फेंक दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने अपना ट्रिब्यूट पेड किया। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी easy for you to understand and keep in your mind this summary of the story। इस तरह से अगर हम लोग इस कहानी को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में याद रखते हैं तो इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिससे हम लोग रिप्लाई ना कर सकें। एंड those students who like this video will have to subscribe the channel and on the notification for the further video what I will upload you will get properly. I will upload the different types of videos for the class 9, 10, 11 and 12 based on the grammar and literature all. So thank you, and once again I request you to please you will just subscribe the channel and on your notification for the further notice of the video. Thank you. Bye.